In genotype based approaches for DNA fingerprinting, there are two major concepts. One is short tandem repeats and the other one is variable number tandem repeats. STRs क्या है basically? जब हमारे पास number of bases in a DNA sequences which are being repeated is between 2 and 9. Now what is VNTR? अब ये जो VNTR अप्रोच है इसमें जो नंबर ऑफ बेसिस है जो रिपीट हो रही हैं ऑफ कोर्स दैट इज आइदर अननोन कि हमें नहीं पता कि कितनी रेपिटेशन है. सेकंड ऑप्शन इज दैट दिस रेपिटेशन इज बिटवीन 10 एंड 100, यानी कि जो रेपिटेशन है बेसिस की दैट इज बिटवीन 10 एंड 100. अब इसका क्या एडवांटेज है और ये कहाँ लाई करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंट है? नंबर वन, these VNTRs are available on chromosome. Chromosome is basically part of a cell, and then their variations in length lead to find differences between people. यानी कि जितनी इनके अंदर वेरिएशंस होगी उसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे डिफरेंट ह्यूमंस को या पर्सन्स को. बाय डेफिनेशन हमने कहा था कि वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स के लिए जरूरी है कि जो बेसिस पेयर हैं दैट शुड बी मोर देन 9. इट शुड बी बिटवीन 10 एंड 100 और अननोन. अब एक स्पेसिफिक एग्जांपल यहाँ दिखाई गई है जिसमें वी हैव अ सीक्वेंस which is basically of 11 characters and then the sequence is repeated across all this information. So अगर हम इस एग्जांपल को देखें, अब जो हमारे पास रिपीटिशन है इन अ सीक्वेंस दैट इज ऑफ 11 characters which is shown here also. So VNTR की एग्जांपल बेस डेफिनेशन अगेन यही होगी जहाँ पे हमारे पास जो बेस पेयर्स हैं दैट आर रिपीटेड मोर देन 9 टाइम्स पर सीक्वेंस, और यही हमने 11 बेस पेयर की करेक्टर से शो किया है. Now what is the advantages or different applications of this VNTR approach? Number one common advantage is again connection of a children to their parents. अब वो connection क्या है? That can be at different levels. Number one, I will start from our basic application, that is forensic science based application. कि हमारे पास क्या है कि we want to identify a criminal who has committed a crime in some criminal activity. तो VNTRs क्या करेंगे कि हम दोनों क्रिमिनल का प्लस जो हमारे पास डीबी है उसके VNTR अपने पास ऑब्टेन करेंगे एंड देन वी विल कंपेयर देम, एंड इफ देयर इज अ मैचिंग देन वी विल से दैट द सस्पेक्ट इज इन अ क्रिमिनल. सो आइडिया इज सिंपल दैट वी हैव बोथ VNTR एलीज फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन और वो एक पर्सन की होंगी, उनको कंपेयर किया जाएगा. इफ दे मैच देन दिस इज द सस्पेक्ट इज अ क्रिमिनल, अदरवाइज वाइस वर्सा. देन इनहेरिटेंस मैचिंग. So what is the effect of this inheritance matching? That they should VNTR also follows the rule of inheritance, that is from grandfather to father and then to children. और इसका advantage क्या है कि we want to identify that who is the grandfather of a person and then who is the father, who is the mother. This information can be obtained. So if this relationship is direct means that between father and child it is straightforward, and if it is distant like grandfather of grandfather, then what will happen? There is a term which is called degree of relatedness. Degree of relatedness means that how much information remains common across the generation, that okay, from grandfather to grandfather there is some degree of relatedness, and then from grandfather to the current person there is some relatedness. So this relatedness should be constant while we are comparing this with the help of VNTR. So speaking broadly we can say that STR आसान टेक्निक थी क्योंकि उसमें सीक्वेंस जो था वो कम कैरेक्टर्स का था. On the other hand, VNTR will give more accurate and good results, but the problem would be that since there is a huge data and this sequence to find out these repeated patterns which are of high number of characters, it would be tough. But both approaches are being used, VNTR and STR. They are used to identify some person which can be involved in some criminal activity, or to identify or uniquely identify a person for specific applications we can use VNTRs plus STRs.